गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द स्ट्रीम। क्या हाल चाल है भाई सबके? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो थोड़ा लेट हो गया आज, सॉरी उसके लिए। थोड़ा काम कर रहा था ना। लेट्स सी भाई अपना लाइफ कैसा है। ओ भाई साहब, 202 सब्सक्राइबर हो गए भाई। थैंक यू सो मच भाई जिसने भी सब्सक्राइब किया, मीन्स अ लॉट। वेल भाई, अपन ने कल द फोर्जा की स्ट्रीमिंग स्टार्ट करी थी, आज भी फोर्जा की स्ट्रीमिंग कंटिन्यू करेंगे। बीच बीच में क्रू भी खेलते रहेंगे। क्रू का भी प्लेलिस्ट खत्म नहीं हुआ, लेकिन अभी 3-4 स्ट्रीम फोर्जा की होएगी। ठीक है, उसके बाद अपन फोर्जा क्रू की करेंगे स्ट्रीम। ठीक है। कि भाई चलो स्टार्ट कर। हाँ, what the hell? इसमें वो नहीं है क्या स्ट्रीमर मोड? हाँ ये है ना। ओके, क्योंकि लाइक लास्ट टाइम क्या हुआ था ना। लास्ट टाइम क्या हुआ था कि भाई अपना कॉपीराइट आ गया था स्ट्रीम पे, लास्ट वाली स्ट्रीम, कल की स्ट्रीम पे। लेकिन मतलब वो स्ट्राइक नहीं आई थी, कॉपीराइट आया था बस। और दो जगहों पे अपना स्ट्रीम नहीं चल सकता, एक रशिया और एक और जगह थी। वेल भाई, जो ने भाई मेक श्योर टू लाइक द स्ट्रीम। जो अभी अभी आया, और मेक श्योर टू सब्सक्राइब अगर तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो। Welcome back, champion. वेलकम बैक चैंपियन। ओके, तो भाई आज अपन, जैसे मैंने कल बोला था कि आज ट्यून करेंगे भाई थोड़ी मोड़ी गाड़ियाँ, क्योंकि ट्यून के बिना यार गाड़ी चलाने में मज़ा नहीं आता। ठीक है। और कल अपने को ये भाई बहुत सारी गाड़ियाँ भी मिली थी, थोड़ी दिखा देता हूँ मैं। बढ़िया बढ़िया अपने को ये हुरैकन भी मिली थी। वैसे मैंने एक भी रुपया अभी तक खर्च नहीं करे हैं, ना गेम के ना रियल लाइफ के इस गेम में। ये गाड़ी, सारी गाड़ियाँ एक दिन में मिली है मुझे फ्री में। ठीक है। ये सारी गाड़ियाँ एक दिन में मिली है मुझे। तो यू गाइस कैन ऑल्सो सजेस्ट कि तुम्हें कौन सी गाड़ी देखनी है मुझे चलाते हुए, तो सजेस्ट भी कर सकते हो। लाइक मेरे को गाड़ी डी वो है अभी, बी एम डब्ल्यू M2 है, एम सीरीज कूप है, i8 है, बेंटली की भी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं अपने पास, लैम्बोर्गिनी की है, इलेक्ट्रिक भी है। अगर देख रहे हैं इलेक्ट्रिक भी, तो इलेक्ट्रिक भी बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हैं मेरे पास। AMG की है, मर्सिडीज की, पगानी है अपने पास, सुपरा भी है। ओके। हम्म तो भाई आज कंटिन्यू करते हैं भाई द फोर्जा की स्ट्रीम। कार कलेक्शन, क्योंकि व्हील्स भी मिला अपने को। गाने तो अभी बज रहे हैं बस। और हाँ, अपने को घर भी लेना है एक बढ़िया सा, जो कि हम लेंगे भाई फ्यूचर की स्ट्रीम्स में, क्योंकि अभी उतने पैसे नहीं है। बहुत महंगी महंगी घर है भाई इसमें। और हम लेंगे भाई सबसे महंगी घर, जो कि तुम्हें मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर में। ओके, सो अपने पे क्या मैसेज आ रखा है? ओके, अपने पास व्हील स्पिन है तो अपन व्हील स्पिन भी कर लेते हैं। वैसे करना तो नहीं चाहिए, क्योंकि व्हील स्पिन रखनी चाहिए अपने पास, क्या पता कब काम आ जाए। तो अभी अभी के बाद जितने व्हील स्पिन मिलेंगे अपन यूज नहीं करेंगे। यार थोड़ी सी और तो एक बढ़िया सी गाड़ी मिल जाती है अपने को।
ये सारी डीएलसीज है वैसे खरीदने के लिए। बैक स्टेज में कुछ अलग आया है क्या? कि नहीं, आई गेस वीकली चेंज होता, उधर लिखा हुआ है वैसा टाइम। ओके, इसमें कुछ भी नहीं है लाइक व्हील स्पिन वगैरह। ठीक है। ओके तो भाई सबसे पहले अपन अपनी जो ये है हुराकन, इसको अपग्रेड करेंगे। ठीक है, हम खोलते हैं भाई मैप और हम चलते हैं भाई होराइजन फेस्टिवल। Turn around when it is safe to do so. भाई बारिश में गाड़ी चलाने का कुछ और ही मजा है। In 400 meters, you will arrive at your destination. You have arrived at your destination. एक सेकंड, मैंने अपना DS4 कंट्रोल कंट्रोल कंटिन्यू कर रखा है। ओके हो गया। ठीक है। ओके तो हम आ चुके हैं भाई अपनी गैराज में। ठीक है, Looking to upgrade your ride? हम लाइक खुद Come से to भी the right ट्यून कर place. सकते हैं, Let me show लेकिन you around. आई प्रेफर कि मैं उतना अच्छा ट्यून नहीं करता। ठीक है, तो मेरे लिए ये चाहिए कि भाई मैं We keep दूसरे records के of every ट्यून्स देख mechanic who सकता हूँ। goes through the garage. So if you want to try someone else's engine tune, you can. मैं दिखा नहीं रहा है लेकिन यहाँ पे तो भाई हमें क्या चाहिए देखो, इसमें क्लास के हिसाब से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए ग्रिप और गुड फॉर स्पीड। हम्म देख रहे हो भाई क्या ट्यून करी है भाई बंदों ने। 440 जा रही है एक तो लेकिन बाकी सारी चीजों का भी ध्यान रखना है। रुको एक बार ट्राई करते हैं कि इसमें कौन कौन से मिल रही है। वैसे तो सारी ही अच्छी है, लेकिन ये मेरे को बढ़िया लग रही है। 2020 S1 ग्रिप। ये 5 स्टार ग्रिप है। ठीक है, इसमें ग्रिप भी अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, मतलब सब ठीक ठीक है। ओके ठीक ठीक है सब कुछ। आई गेस ये लेनी चाहिए अपनी को। देखते हैं, अगर अगर ग्रिप अच्छी नहीं हुई तो हम चेंज कर सकते हैं उसको। Do you want to continue working? Or shall we get these installed? इसलिए मैं बोल रहा था कि भाई ट्यून करने में जो ऐसी तैसी हो जाती है ना देखो अपना हॉर्स पावर भी कितना ज्यादा बढ़ रहा है। देखो 630 हॉर्स पावर से सीधा 1500 हॉर्स पावर जा रहा है, देख जो। और अपनी S2 क्लास से सीधा X क्लास हो गई है। S2 नहीं S1 क्लास है। ठीक है, और अपने को इधर डिजाइन वगैरह If भी you मिल want to सकती repay your है। ride, you're in the right place. ओके तो ये अपना मार्केट है। इधर अपने को दूसरे लोगों की भाई ट्यून्स मिलती है। कौन सा लगा सकते हैं भाई? ये जीरो फैन की जैसे लग रही है, वैलोरेंट में होती है ना, अगर कोई वैलोरेंट खेलता है तो ये बढ़िया लग रही है ना ब्लैक में। पर ये भी अच्छी लग रही है।
हम्म, ये भी अच्छी लग रही है, एक बार देखते हैं, रुको रुको। आई गेस अपने को व्यू करने का ऑप्शन होता है खरीदने से पहले कि देख सकते हैं। हम्म, वो बाय हो गई है क्या? डैम, एक बार देखे, देखते हैं, चलो रुको। ओ, अच्छी लग रही है ना? डैम, ओके चलो फिर अभी के लिए ये रखते हैं, और तुम्हें दिखाता हूँ भाई डिफरेंस, ठीक है? तुम भाई कल की स्ट्रीम देख लेना जाके, ठीक है? और आज की स्ट्रीम देखो भाई तुम। भाई थोड़े ब्रेक अच्छे हो जाते हैं ना इसके तो बढ़िया हो जाता है, ठीक है? ओके चलो, इससे थोड़े बहुत रेसेस करके देखते हैं अभी। अपना क्या गोल है? अपना गोल है अर्न 3900 मोर एक्लेट पॉइंट्स टू अनलॉक द नेक्स्ट होराइजन चैप्टर, ठीक है? तो अपने को एक्लेट पॉइंट्स चाहिए, और वेल अपने को एक्लेट्स देखते हैं, ये हटा देते हैं। हम्म, 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 हम्म। क्योंकि बहुत सारी चीजें अपने को दिखते रहेगी तो अपन डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे, और समझ में भी नहीं आएगा कि क्या देखना है अपने को। लाइक तो अभी अपने को बस वो करना है, ये हटा देते हैं, और ये भी। ठीक है, अपने को अभी ये दिखेगा। सो इन सब चीजों से अपने को एक्लेट पॉइंट्स मिल सकता है, ठीक है? क्या करना चाहिए अपने को? देखिए अपन ने गाड़ी ली है तो एक रेस ही कर लेते हैं, ये वाला रेस कर लेते हैं, ठीक है? पास में ही है। At the roundabout, take the first exit. देख कुछ ज्यादा ही स्लिप नहीं कर रही है। You have arrived at your destination. एक सेकेंड रुको भाई मेरे को थोड़ा वो हो रहा है कि मेरे को पक्का पता है ये फिसलेगी, ठीक है? तो एक बार वो करते हैं, लाइक ग्रिप वाली। हम्म, अपनी वाले की ग्रिप कितनी है? देखो यही बढ़िया लग रही है मेरे को, ठीक है ना? अभी के लिए अल्टीमेट ग्रिप। थोड़ा सा स्पीड कम हो जाएगा, लेकिन अपन कौन सा 400 पे चलाने वाले हैं वैसे भी। सो ये अभी के लिए यूज करते हैं। वैसे ज्यादा पैसा लगने नहीं चाहिए, क्योंकि अपन ने पहले ही बहुत ज्यादा पैसे लगा रखे हैं, तो अपन डाउनग्रेड ही कर रहे हैं इसको तो। मेरे को तो लग रही है होने वाली है ऐसे तैसी। लेकिन मेरे को अपनी पुरानी वाली अगर बिल्ड मिल जाती है ना तो बहुत मजा आता है, ठीक है?
लेकिन लेट्स सी। ओ भाई, सामने वाले भी लेके आए भाई अपनी STO। भाई लाइक फिसल तो ये भी रही है वैसे। अरे भाई, भाई आई गेस मुझे छोटी गाड़ी लेके आनी चाहिए थी। क्योंकि ये तो नहीं लग रही भाई इसमें कुछ हो पाएगा इसका। जी भाई। ओके भाई ठीक है, सेकंड भी ठीक है, उतना कुछ बड़ी बट खराब नहीं है। देखो भाई उनका भी बढ़िया बढ़िया था वैसा तो कार ग्लास वगैरह। अपना ट्यून सही नहीं था ठीक है भाई, मिली सेकंड से भाई, मिली सेकंड से अपन थोड़ा नीचे हो गए। कोई बात नहीं। अभी है भाई अपने पास टाइम, तो अपन अच्छे से ट्यून करेंगे बैठ के इसको। लेकिन मुझे पता है एक ट्यून है ऐसा जो कि बहुत अच्छा ग्रिप देता है। हम्म। हाँ देख, इससे थोड़ी सी हैंडलिंग अच्छी होती है। ओके 8.8 हैंडलिंग है ठीक है, अपने को एटलीस्ट भाई 10 हैंडलिंग चाहिए तो 9 हैंडलिंग चाहिए। तो देखते हैं को। हम्म। टेस्ट फॉर हैंडलिंग ना, ये सर्च करना था अपने को। 9.5 देख अब आ रही है ना गाड़ियाँ। वेल S2 है वैसे तो। ओके ये बढ़िया है। फास्टेस्ट STO टून, बेस्ट ग्रिप 9.5 ठीक है, 9.1। हम्म। वेल देखो भाई एक्स क्लास में तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है हैंडलिंग, है इसमें है हैंडलिंग अच्छी। ओके, पावर कम हो जाएगी, टॉर्क कम हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगा, लेकिन ओके एक्सेलरेशन ज़्यादा जल्दी बढ़ रहा है ठीक है। ओके ओके, बेस्ट ग्रिप भाई मुझे तो ये बढ़िया लग रहा है देखने में। लाइक 387 ओके ओके स्पीड है।
तो है यार, करना है कि नहीं करना है बताओ। 88 लग रहा है भाई, मुझे तो पैसे वेस्ट लग रहे हैं। अभी के लिए हम क्या करते हैं, अभी के लिए देखो ये अपना बेस्ट टीम है, ठीक है, तो हम इसी को यूज करते हैं अभी के लिए। यही तो खरीदना पड़ेगा। ओके चल, लास्ट, ठीक है, इसके बाद अभी मैं कुछ भी नहीं खरीदने वाला है इसमें। ओके ठीक है, ब्रेक्स अच्छे हैं इसके, ठीक है, ओके ओके। वेल ड्रिफ्ट नहीं कर रही है, वही अपने को चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं अभी, हम एक और रेस कर सकते हैं जो कि ये वाली रेस है। तो Turn फिर अपने को around जितनी when सीधी it is रेस safe मिलेगी to ना do उतना so. बढ़िया है। पटाखे सुनो यार तुम बस। In 400 meters, turn right. Turn right. ओ 400 meters, turn left. भाई 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 भाई, एक तो इतनी पानी भरा के है ना भाई रोड पे। Turn left. मुझे मतलब एक्सीलेटर से हाथ हटाना सीखना पड़ेगा। लाइक एक्सेलरेशन से हाथ हट ही नहीं रहा है मेरा, दबा के रख रहा हूँ मैं। इवन व्हेन आई एम यूजिंग ब्रेक्स ना, तब भी। You have arrived at your destination. तू। ओहो, क्या मस्त भाई मौसम हो रखा है। वेल थोड़ा डिफिकल्टी कम कर लेते हैं, ठीक है। एवरेज ठीक है, एवरेज ठीक है।
तो F1 ही ले आया भाई ये बंदा। तो क्या F1 नहीं है, वो अपने को भी मिली है वो। F1 का छोटा भाई। वो ठुकी गई भाई। मेरे से बढ़िया पिकअप नहीं है किसी पे। लाइक सीधे रास्तों में तो यूं भाई। हाँ हाँ हाँ। देख रहे हो भाई, 40-40 लेवल, 99 लेवल, 222 लेवल के बंदों को मैं हरा रहा हूँ। Nice! Kudos are a good way to send positive vibes around the festival. नाम See पे you मत trying जाओ, to do नाम पे something मत you जाओ। like? Kudos to them. ओ ओ नाइस। चलो भाई, अपना जो अपन ने अपग्रेड करा था उसका खर्चा निकल गया। नाइस भाई। ओके, तो अभी अपन कहाँ जा सकते हैं और वेल एक और रेस करते हैं, ठीक है। एक और लंबी वाली रेस करते हैं और उसके बाद अपन करेंगे ये दिस वन दिस स्टोरी, ठीक है। वेल अभी के लिए अपन ये वाली लंबी लग रही है वैसे, ये वाली ना, यहाँ पे चलते हैं। Turn around when it is safe to do so. भाई धीरे चल रहे तो पटाखे जा रहे हैं भाई इसके। In 400 meters, turn left. Turn left. In 400 meters, turn right. Turn right. At the roundabout, take the second exit. In 400 meters,
Turn right. Turn right. वेल अपन यही यूज करेंगे क्योंकि हम इसको ट्राई करने के लिए रेसेस कर रहे हैं एक दो, क्योंकि रेसेस में भी अपने को एक्लेट मिलते हैं। तो एक तीर से दो निशाने हो रहे हैं अपने, ठीक है ना। अब मैं क्या बोलूं यार, खुद की तारीफ करने में तो अच्छा नहीं लगता ना। वेल भाई, आज चलो कल कंटिन्यू करते हैं अपना वो नेक्स्ट जो अपन करने वाले थे आज। Hey, champion. I have blueprints लो for a मिल bunch गया। of new adventures, and you have decisions to make. वेल ऊपर वाला तो कंप्लीट हो गया था सारा। नेक्स्ट इसमें चलते हैं। सिक्योर द ब्लेसिंग ऑफ ईल कैंपियन। I know, right? There's Mexican car wrestling at Horizon, and I'm stuck up in the operations center. Adding it to your schedule. वेट, अपने पे और भी तो गाड़ियां हैं ना, वो चलाते हैं। एक ही गाड़ी थोड़ी चलाते रहेंगे। कौन सी गाड़ी हम चला सकते हैं और तुम्हें देखनी है? पता नहीं, तुम्हें दिखाने के लिए चला रहा हूँ बस। बाकी वेट, अपने को ना अपन चेंज कर सकते हैं इसकी लिवरी, लेकिन हर बार चेंज करनी पड़ेगी। और लिवरीज वैसे तो फ्री होती है, तो उतना कुछ उसका वो नहीं है। ये रख के अच्छा लग रहा है गोल्डन वाला। आई गेस अपनी को होराइजन भेज देगा ये। ओह क्या लग रही है ना। ओह माय गॉड, प्याव।
400 meters, turn left. Turn left. ये गोल्ड कलर अच्छा लग रहा है, वैसे अभी दिख नहीं रहा क्योंकि रात हो रही है। भाई स्टॉक में 320 जा रही है, 330। At the roundabout, take the second exit. In 400 meters, turn left. Turn left. In 400 meters, turn right. हाँ बोल, क्या हो गया? सुन रहा हूँ। Turn right. अभी नहीं आ पाऊंगा भाई, मैं अभी मैं स्ट्रीम कर। अब भाई मेरे को चेंज करना पड़ेगा पूरा। तुम खेलो, मैं तो सुबह से खेल के आ गया। In 400 meters, turn left. मैं अभी बीच में बंद नहीं कर सकता हूँ। Turn left. You have भाई arrived at your अब भी थोड़ी आ destination. सकता हूँ मैं, पहले बोलना था ना। अगर फिर मेरे को अभी सब कुछ वापस से करना पड़ेगा, तो मैं अभी नहीं आ पाऊंगा। तुम खेल लो यार, किसी को बुला लो ना, रैंडम रैंडम को। कल खेल This लूंगा मैं, is El Campeón, one अभी of तो the नहीं आ greatest पाऊंगा। lucha de carreteras fighters in Mexico. Señor Campeón, may I present the driver I told you about? Híjole, that went well. Wait, what? That means El Campeón will train you. But you must prove that you're worth his time. I've got a car ready. So, ये बात you need to करूंगा। really keep that speed up. Lucha de carreteras is about agility, speed, and precision. Yeah, I can do that. Lucha Libre is Mexico's beloved world-famous wrestling, and Lucha de Carreteras is the latest evolution of lucha and racing. So, it is necessary to have El Campeón's blessing for the festival. भाई 209 से नीचे स्पीड नहीं आनी चाहिए, नहीं तो टाइमर आ जाएगा।
Long straight. Take the right. Left turn up ahead. Mexico worships its lucha libre heroes. It's crucial to have El Campeon's blessing for the lucha de carreteras. So let's really keep that speed up. That's definitely enough to impress El Campeón. Well done. El Campeón is prepared El to take you Campeón on as a कौन है भाई? student. ¡Felicidades! 2 स्टार कैसे मिल सकता है भाई? मैंने उंगली भी नहीं उठाई थी, पता है? कुछ सेकंड्स के लिए रह गया, बताओ। ओह, अब बढ़िया लगेगा Oye, भाई। El Campeón is ओह, waiting क्या to take लग you रही through a है? training session. Meet us here. In 400 meters, turn sharp left. Turn sharp left. In 400 meters, turn left. Turn left. In 400 meters, you will arrive at your destination. हाँ भाई, अगर इसका कलर So, चेंज हो गया ना, there are 3 phases of तो ये training भी for यूज you. करेंगे अपन। I'll explain the rules and how it works. Any questions? Don't I need a mask? Yes, you do. But you have to earn it first. Pero antes, you must demonstrate agility. Lucha de carreteras combines el espectáculo Mexican Wrestling con el poder de las carreras de autos. Hit the fences, go through the fields. Don't worry, the farmers love lucha de carreteras. ओहो भाई, पानी में जाने में अलग मजा है।
El campeón seems impressed. मस्त But भाई. next, you must demonstrate your courage. Lucha de carreteras often demands bravery as well as skill. See if you can make it through this one, Valiente. I can do, Valiente. I am sure you can. ¡Vámonos! I think it all started when a doble de riesgo jumped off his car into the ring. That sparked the idea for Lucha de Carreteras, and the rest is history. Ramp ahead, keep that speed up. What a drift! ¡Qué valiente! Only the brave can score like that. Sharp right, coming up. अपने को ऐसे ही करना है, वैसे भी चेक पॉइंट तो है नहीं. जी हो गया. ठीक भाई. अरे यार इधर ठुकना ही है मुझे भाई. आई गेस हमें सीधे सारे बच्चे की तरह रीस्टार्ट कर लेना चाहिए. बस ठुक ही रहा हूँ मैं. जी भाई. This is the final test. It's you against El Campeón in a test of speed. भाई अभी आएगा चैंपियन, पता नहीं कौन है. ओह ये. Vamos! It's just like Lucha Libre. First to the finish wins. Stay on the route, only if you see flares. Ready? तो बहुत दूर है मेरे से. Cuidado! Extreme left turn. Another tight left. The Rudos route could really save us a few seconds. They always know the good shortcuts. Vamos cross country. Don't miss the turn. Loco, I heard there's a shortcut behind some bushes around here. ओह शिट.
Písale! Punch it down the straight! वो सीधा पहाड़ में घुस गए क्या? बच गए। You did it! You beat El Campeón! You've got a big future ahead of you. Bien hecho! I think there's no doubt you've proven yourself. El Campeón agrees and will sponsor you under the name of Toro Loco! 1 स्टार ठीक है, कोई नहीं, हम ठुके भी थे बहुत। Eso, mi Toro Loco! Your first Tiro is ready! Come with me and let's get you set up. Shh! Secret identity is safe with me. Round 1 is a go! Red line, that's speed zone! ये कहाँ Coming गया? up, a speed zone. See if you can make it explode. Turn around when it is safe to do so. ये है क्या भाई? मेरे को नीचे वाला बार भरना है शायद, स्पीड में रह के। अरे इस साइड से हो जा रहा है, इस साइड से नहीं हो रहा। थोड़ा सा और अरे यार Round 1 complete! Get to round 2. Drive fast and don't stop! Go! Okay, Huh? points for every second you drive over the speed limit. Should be too hard for you lot.
ओ ये क्या है भाई, इसमें कुछ तो है। वो इसका ये खुल गया ऊपर वाला, डैम। Time out! Round 2 failed. Ah, bad luck. Hey, there'll be another one starting soon, if you want to go again. ओके अपन ये नहीं करते, अपन जो कर रहे थे वो कंटिन्यू करते हैं यहाँ Hey, पे। amigo. Remember that thing I said I needed help with? This is it. You in? Of course. What do you need? Excellent. Come meet me near अब Mulehe. कौन सी कार चला सकते हैं हम? अपन ने और कौन सी नहीं चलाई भाई? बेंटली नहीं चलाई हमने, ऑफ रोड करी क्या? ऑफ रोड करते हैं, ये भी यूज नहीं किया हमने अभी तक। वेल वेट एक सेकेंड, अपन देखते हैं अपना कार का कलर चेंज हुआ या नहीं हुआ है। ठीक है, मेरे को तो पूरा कलर चेंज नहीं हुआ। डैम, अगर अपन इक्विप करते हैं और अगर कलर चेंज नहीं हुआ होता तो फिर तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। ठीक है, वो नहीं हुआ। ओके ओके ठीक है, ओके फिर अपन वो भी अपग्रेड करेंगे। ठीक है, तो मतलब उसका मतलब अपन इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी फिर। ओके, मैं लिवरी लाता हूँ भाई तुम्हारे लिए यहाँ पे। भाई मुझे ये ब्लैक वाली पसंद थी, लेकिन मैंने ब्लैक वाली लास्ट टाइम लगाई थी ना, तो लाइक वो चेंज हो गया था, वापस से इसी कलर में आ गया था। ये ग्रीन वाली भी अच्छी लग रही है थोड़ी थोड़ी। विच वन भाई? ग्रीन टायर्स भी अच्छे लग रहे हैं, लाइक जी लिखा हुआ है। कौन सा करे? मुझे तो ये अच्छा लग रहा है, लाइक सिर्फ टायर्स इसके ग्रीन ग्रीन है और थोड़ा सा लाइक हुड में ग्रीन है ना शायद, आगे बोनट में। हाँ ये लाइक गुड। गुड। Turn around when it is ओ safe to do अबे so. इसमें भाई रेनबो कलर्स है भाई, अलग अलग दिख रहा है। डैम, In 100 meters, turn right. In 400 meters, turn left. Turn left. ओ In 400 meters, turn right. वो हम कह रहे लेफ्ट राइट भाई, हम तो ऑफ रोड जाएंगे। Recalculating route. तो धुल गई भाई गाड़ी। भाई गाड़ी के नीचे देखो भाई, रील से धुल गई। In 400 meters, turn right. Turn right.
amigo. Have you heard of the Carrera Panamericana? I've just been told about another barn find nearby. Shall we go find it? भाई ऑफ रोड व्हीकल से ऑफ रोड करने में जो मजा है वो कहाँ से जा मुझे लगा यार इधर ऑफ रोड आएगा सीधा वो साइकिल लेके किधर जा रहा है क्या Arrived at your destination. ये नया है ये दूसरा है अगर हमने उसको हरा दिया वैसे भी तो ये Hi, नया ही Rami. है What's the plan? Okay, hear me out. Beautiful Mexican supercar, beautiful ये Mexican कौन सी है roads, भाई Ural promoting the Horizon Ural Festival. Ural है Do we need promoting? The festival seems to be doing okay. All right. I'll find someone else. That's not what I said. Of course I'll help you. I knew I could rely on you. Let's go. जहाँ तक मुझे याद है भाई बहुत फिसलती है ये Let's get moving. Get some speed, then turn into the countryside. Really see what this car can do. Turn right. भाई कैसे बैठे हुए हैं ये नहीं फिसलती नहीं Yeah, है great speed. But let's see how you handle some corners. You want to tell me about the car, don't you? I thought you'd never ask. So, VUL is an abbreviation. It stands for Vehicles of Ultra Lightweight and High Performance. It was started by two brothers, Guillermo and Iker Echeverria. Less sightseeing, more going fast. The VUL 05 is a track-focused supercar, designed and produced in Mexico, but tested and optimized in the UK. क्या मुझे लगा I ये even think स्लिप I saw करेगी one at बहुत the आई गेस वो festival when I दूसरी was वाली over कार there. थी We're driving the pre-production version of the VUL 05RR, the even more track-focused version. Somehow, the designers reduced the weight by 65 kilos
and increased the power to nearly 400 bhp. Then they lowered the engine by 50 millimeters to drop the center of gravity and improve cornering. Impressive. They're pretty serious about the ultralight part. The 05RR even has an option for titanium bolts, saving another 4.5 kilos. What's the RR stand for? Road and Racing. The car was designed for an enhanced track experience, but remains road legal. In 400 meters, you will arrive at your destination. Perfect. भाई at least There's a couple of two other star things तो you can मिलना help चाहिए out भाई, with, at least. if it's not too much trouble. You're never gonna let me live that down, are you? Call me. 3 ही मिल गया टाइम. Nice. I just got my hands on a piece of Mexican racing history. Wanna see? Of course. On my way. In 400 meters, turn right. और मेक श्योर टू लाइक द स्ट्रीम भाई, जो नए आए हुए हैं और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, वो भी सब्सक्राइब कर देना कि भाई फ्यूचर की स्ट्रीम्स तुम मिस ना कर पाओ. फ्यूचर में भी हम बहुत सारी मस्त मस्त गेम्स खेलने वाले हैं, और अगर ऐसी वीडियोस देखते हैं तुम्हें अच्छा लगता है भाई, सुंदर सुंदर गेम्स देखने में, सुंदर सुंदर गाड़ियाँ देखने में, तो भाई सही चैनल पे हो. क्योंकि मैं डिफरेंट गेम्स ट्राई करता रहता हूँ. और चैट भी कर सकते हो क्योंकि मैं चैट भी पढ़ रहा हूँ. भाई ऑफ रोड गाड़ी है और ऑफ रोड में 400 जाएंगे तो meters, क्या फायदा. turn left. Turn left. Woohoo! You have arrived at your destination. नाइस भाई. ऑफ रोड करते हुए भाई पूरा एकदम जंगल उखाड़ दिया Let me पूरा. guess. Today's episode of Mexican Automotive History with Ramiro is about the Baja 1000. बाहा. ओके. You are very perceptive, my बाजा को friend. बाहा This बोल dune रहे हो. buggy was the first car to race here. Let's take it for a spin.
The Baja 1000 is probably the most prestigious race held in Mexico. Do you know how it all started? I assume the Myers Manx has something to do with it. Correct again. The Baja 1000 started as a very elaborate Damn, marketing bhai, chota campaign for packet, the bada car you're dhamaka. driving. But let me start Achhi from chal the rahi hai. beginning. On the 22nd of March, 1962, Dave Eakins and Billy Robertson did the first real Baja run. They went from Tijuana to La Paz in 39 hours, 56 minutes on new Honda CL72 Scrambler motorcycles. So they probably were a bit sore afterwards. They got a lot of media coverage though. A year later, Myers started to work on a prototype buggy he called Old Red in his garage in Newport Beach. It was based on the VW Beetle, and it paved the way for what we know as buggies. Cars that are built for off-roading using the Beetle as a donor chassis. But I guess they wanted even more publicity because in April 1967, Myers decided to make an attempt at breaking Eakins' record. And it worked! Myers did it in 34 hours and 45 minutes, beating Eakins for more than 5 hours. The rivalry was known as Buggy Beats Bike in Baja. Sounds like something you Oh, did ye back kya in ho the UK, doesn't it? भाई उस आइस में प्रॉब्लम है. आइस तो नहीं, स्नो द स्नो. क्या धूल है भाई, मजा आ रहा है. Turn around when it is safe to do so. Myers Manx became an overnight sensation as a result, and suddenly they were friendly races all across the Baja. It wasn't long before they realized they needed something more organized. And that was Mexican 1000. Guess who won the inaugural event? Myers Manx? You're on fire today! Yes, in 27 hours and 38 minutes. The official race was 100 miles shorter than the original route, but it's still impressive. The Mexican 1000 was later renamed to the Baja 1000 and is run to this day. In 200 meters, turn left. प्लेट की ऐसी कैसे करती भाई. ये गाड़ी चला के ऐसा लग रहा है बीच बग्गी खेल रहा हूँ मैं. 100 meters, turn left. ओह 360 भाई. In 200 meters, turn left. Turn left. I love that story. My abuela used to tell it to me at least once a year. भाई इतना शॉर्टकट लेके आए फिर भी 1 स्टार. Hey, come quick! Papa Fernando needs your help! Okay.
I'll be right there. In 100 meters, turn left. Turn right. In 400 meters, turn right. Turn right. Turn right. ओके एंटर कर रहे हैं भाई अपन सिटी में। वेल ये एक सिटी है भाई जो कि बहुत अच्छी सिटी है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर सिटी है भाई। In 400 meters, turn sharp left. Turn sharp left. ये लेफ्ट है, वाओ। 200 meters, turn left. Turn left. In 100 meters, turn left. वेल वो जो बड़ा घर है वो भी यहीं पे है। वैसे घर नहीं है, होटल है वो, बहुत बड़ा सा कासल टाइप। तो दिखाऊंगा वेट। ये रहा, ये दिख रहा है, ये घर हम खरीद सकते हैं वैसे। ये दिख रहा है तुम्हें इतना बड़ा सा घर। देखो भाई मैं दिखाता हूँ, ये है भाई अपना घर। मतलब अपना नहीं है, लाइक खरीद सकते हैं अपन यहाँ पे, जितनी गाड़ी चाहे वहाँ उतनी गाड़ी रख सकते हैं। वैसे मतलब यूजुअली तो अपन एक ही गाड़ी लाइक बाहर रख सकते हैं, ठीक है। और क्या, तो रुको, ये और तेज कैसे जाएगा यार, तेज जाता भी तो नहीं है। ओके इससे ठीक है। यहाँ पे भाई अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर सकते हो तुम। यहाँ पे और गाड़ियाँ रख सकते हो, उस साइड भी है। और दिखाता हूँ, गाड़ी से जाके दिखाता हूँ। इधर भी जा सकते हो तुम, ये पूरा एरिया है भाई तुम्हारा, ठीक है।
You have जो कर arrived at सकते हो your वो करना destination. चाहते हो वो कर सकते हो उधर। तो जो भाई तुम गेम खोल रहे हो, यहाँ पे तुम्हारी गाड़ी रखी हुई है, तुम बैठ के जा रहे हो, पता है कितने का है यार? ये है भाई 5 मिलियन क्रेडिट्स का घर है, जो कि हम लेंगे जरूर। जब भी घर लेने का अपना प्लान होगा तो अपन ये वाला घर लेंगे। Oh, right. I get it now. ये देखो हम To यहीं be पे honest, रुके हैं। though, it was me who needed your help, not Papa Fernando. I can't fault that logic. Who are the other racers? It's this new street racing crew that's been hanging around. I think they're here to see what you can do. Let's show them. Hey, he's eager. But this isn't really a street race. There's no checkpoints, just a finish line. So keep to the route and get there first. It's hard to overstate the effect that the Beetle had when it arrived in Mexico in 1954. Before that, all we had were these huge American cars. So this new European-style car with its shape and light chassis and Thank those you, भाई, adorable सीधा कर दिया headlights मेरे को। and an engine that anyone with a tractor could fix was, well, a complete game changer. They were so exciting that they were displayed at the Ciudad Universitaria in Mexico City, and there were lines to come and see this new car. ये तो Keep it मेरी up. मदद कर दे रहे भाई We'll गाड़ी win मोड़ने this. में। Production of the Beatles started in Mexico soon after 7 of them finished the Carrera Panamericana. Before that, people were a bit worried about reliability, you see. We Mexicans love a good-looking car, but a car that can do work is better. The Panamericana convinced us, and in '61, Automex had assembled 250 of them. By '62, the first plant had opened in Jalostoc, making 10 of them a day. We love that car. So another plant opened in Puebla in 1967. And in '71, El Bocho became the official taxi of Mexico City, which is why you see so many of them today. It's funny. The first Bochos were imports, or CKDs. But in 1971, we were exporting them to Costa Rica and back to West Germany, ये Austria, गाड़ी Belgium, जैसी डम सी लग everywhere in रही है Europe. ना, लाइक क्यूट भी लग रही है, It was लेकिन a ऐसा भी sad लग रहा day है in कि डम गाड़ी 2003 है। when the last Volkswagen Because sedan मेरी Ultima गाड़ी को नहीं बोल रहा हूँ, rolled off ड्राइवर the को बोल production रहा हूँ, line पीछे जो and ठुके। went home to the Volkswagen Museum in Wolfsburg. Nice overtake! गाड़ी तो मस्त है। Now that's more like it! Eso, Mochito, eso! So loved was the Bocho that it eventually outsold the Ford Model T to become the world's best-selling car. And was the first to reach 20 million sales. Sure, other cars इतना have बड़ा staked their cockpit claim हुआ on है that इसका। title in recent years, but none are so timeless and unchanged as the Bocho. जी हो That गया is a गाइस। great car. Probably the most iconic car in all of Mexico. Ay, es increíble que un auto tan pequeño deje un vacío tan grande. Adiós, sedan. Thanks. I'll call you when I've got that next one ready. I have a brilliant idea. Another one. What happened to the previous idea? This one is better. Meet me in town. Hey, champion. Got a moment to look over some adventures? Thought you might. बिल्कुल। The epitome of road racing. Let me talk to Alejandra. See if she can find enough drivers willing to race the Colossus against you. Hola, amigo. That's it. Horizon Apex is finished. The हेलो build. कार्ड, क्या I हाल mean, चाल है भाई? वेलकम टू racing द is स्ट्रीम। never बस बढ़िया, finished. मेरा बताओ। मेरा तो सही है, तुम बताओ क्या हाल चाल है? Hola, amigo. Haley called me. Ready for the Colossus? I तुम can't आ wait रखे हो to ना see you शायद conquer this पहले thing. भी स्ट्रीम में? Turn right.
या फिर फर्स्ट टाइम है? क्योंकि मुझे लग रहा है कि देखा दिखा सा तो लग रहा है भाई कि लाइक तुम पहले भी आ रखे हो। कल आया था लॉल, हाँ दिखा, याद रहता है भाई मुझे। और बताओ भाई कैसे जा रहा है भाई तुम्हारा दिन आज? In 400 meters, turn right. Turn right. कुछ नहीं, बस ऑफिस In 400 चल रहा है, meters, उसके बाद थोड़े turn गेम्स left. खेलने जाऊंगा। और मैं भी रात को स्ट्रीमिंग हो। तुम्हारा भी चैनल है? ओके, यही है क्या चैनल? कितना हो गया स्टोरी? स्टोरी तो अभी लाइक पहला फेस्टिवल कंप्लीट हो गया है पूरा, Turn left. और अभी सेकंड फेस्टिवल में भी, सेकंड फेस्टिवल का लास्ट रेस तो सेकंड फेस्टिवल भी कंप्लीट होने वाला है। वैसे तो उसके बाद भी बहुत सारी चीजें बचेंगी अपने पास करने को, तो ये गेम तो इतनी जल्दी नहीं खत्म होने वाला है। ओके भाई, अगर मैं जगा रहा रात को तो भाई जरूर आऊंगा स्ट्रीम पे। पूरी जल्दी खत्म हो जाएगा। 60 आवर्स? क्या भाई, इतनी बड़ी स्टोरी है क्या? 60 आवर्स कम थोड़ी होते भाई। जल्दी काम हुआ। You have arrived at your destination. ओके भाई, अपने को कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए? देखो भाई, अपन ये ले सकते हैं, लेकिन भाई इसकी हैंडलिंग भाई उतनी खास नहीं है। ठीक है, अपन ये ले सकते हैं। और ये अपग्रेड वगैरह कुछ नहीं किया, स्टॉक है बिल्कुल। जिस रेट से खेल रहा है उस हिसाब से बोला। ओ, मैं जिस हिसाब से खेल रहा हूँ उस हिसाब से 60 आवर्स। ओके ओके, ठीक है।
लाइक एथलीट पॉइंट्स चाहिए होता है ना, तो उसके लिए खेलना पड़ेगा दूसरी चीज वगैरह। तो हाँ 60 This आवर्स is a लग सकते हैं। Colossus, the biggest road race we've ever made. रोंडा, हाँ। मेरे सामने भी जा रही है एक ट्रेन। आज 12-15 मिनट का रेस है। ओके। भाई ये 12-15 मिनट की रेस ना भाई कर दी हुई थी, और जो मैं हारा हूँ, हारा नहीं हूँ मतलब जीता ही हूँ, थर्ड प्लेस में था, लेकिन वो रेस जीत सकता था मैं। गलती क्या करी थी, मैंने गाड़ी अपग्रेड नहीं करी थी और ले ली थी। मैंने गाड़ी तो अपग्रेड वगैरह के हिसाब से तो नहीं आता, मतलब जोन सा तुम्हारा क्लास है, जैसे तुम्हारी गाड़ी उस हिसाब से प्लेयर आता है इसमें। तो मेरी ड्राइविंग खराब थी। ये गाड़ी से यूज करना चाहिए था मेरे को, पता है कल के रेस में। कंट्रोल्स बहुत अच्छे हैं, स्लिप नहीं कर रही ज्यादा। अरे भाई वो पीछे ही है। ओ भगाओ भाई जल्दी।
भाई अभी तक 39% हुआ है बस भाई। भाई बहुत पास आ गए वो लोग। वो भाई पास में आ रहे यार वो लोग। और अभी तक 60% ही हुआ है बस।
यार ये बंदा कर लेगा ओवरटेक लग रहा है मेरे को। एक बंदा होता है भाई, एक बंदा होता है जो ओवरटेक कर देता है लास्ट में, फिर पूरे रेस की माँ बहन हो जाती है। ओ भाई मजा आया भाई। बहुत कम थका हूँ, ठीक है। मैं एकदम भाई इतना इतना एक्सीलेंट से चलाया है ना मैंने, इतने सुपर सीजन से चलाया है मैंने, क्या बोलूं यार।
हाँ भाई, एकदम भाई, एक बार भी आगे नहीं आने दिया। What a कल win! की तरह। Not bad, superstar. You can come कल and के race with स्ट्रीम me में इतना anytime. भाई हगा है मैंने। I'm starting to get the feeling that if I call you after every road race win, you will get tired of me very fast. हो एक गाड़ी मेरी स्काईलाइन जीटीआर शेवी में मेरी एक, और एक व्हील स्पिन भी नाइस। भाई मैं सोच ही रहा था भाई इसको बाय करने का, सही में मजाक से हट के भाई। ये फोर्ड ब्रोंको इतनी मस्त है ना भाई ऑफ रोड में, मिस वाली भाई। वेल तुम लोग वेट करो, मैं 1 मिनट में आया, ठीक है? 1 मिनट में आया बस, मैं वेट। What are you thinking this time? Ah, Horizon Wilds. If you love dirt racing, this is perfect. Gotcha. I'll prep Ramiro for an expedition to the dirt racing outpost. Don't get lost in there. Oye, amigo, ready to head into the jungle? We need to find a dirt outpost and a certain big cat I've been chasing. I'm back, थैंक यू फॉर वेटिंग भाई। जो वेट कर रहे थे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। 400 meters. Turn left.
वेल हम अभी किधर जा रहे हैं? वेट, अच्छा हमने नया वो किया ना। ओह ओके, वेल ये न्यू प्लेलिस्ट वगैरह है। ये इट्स लाइक अ बैटल पास, लेकिन फ्री है सब कुछ, ठीक है। बस अपने को खेलना है और पॉइंट्स मिलेंगे उससे खरीद सकते हैं। वो ये गाड़ी बहुत बढ़िया नहीं Hey, लग रही? champion. This is the Forzathon shop. It's full of rare and exclusive rewards that change over every season. So, take your hard-earned Forzathon points and go shopping. भाई अपने पे 1130 पॉइंट है। ओके 1130 पॉइंट, तो अपन एक स्टेज पास ले सकते हैं और या तो एक कार ले सकते हैं, ये वाली लैम्बोर्गिनी सियान डैम। और बाकी मस्टैंग भी बढ़िया लग रही है, लेकिन मस्टैंग तो अपन खरीद ही सकते हैं। लेकिन बैक स्टेज पास बहुत अपने लिए फायदेमंद रहेगा ना। परचेज नहीं 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 नहीं, अभी नहीं अभी नहीं। और ये सब क्या है? ओ और अभी ऑटम सीजन चल रहा है, ठीक है ठीक है, ओके। हाँ ये वाला, तो अपन शायद इस बार वाइल्ड्स में जा रहे हैं। Turn left. वेल अगर देखो भाई, मैं ये गाड़ी भी चला सकता हूँ। अगर तुम लोग को चाहिए कि जोंडा आरी चलाऊं, जोंडा रोस्टर, ठीक है, तो बता दूं मुझे चैट पे, या तो मैं कोई दूसरी गाड़ी चेंज करूं। लाइक क्योंकि मुझे डिफरेंट डिफरेंट कार्स चलानी है, ठीक है। और ये भी अपन अपग्रेड करेंगे, नई वाली जो अभी जस्ट मिली है अपने को। हम्म मुझे एक बेंटली चलानी है, अभी तक बेंटली नहीं चलाई हमने। ये ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे, लाइक ओ हाँ, बाहर क्यों दिख रहा है? वो थे इसके थोड़े। अरे 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 सर, पागल हो गया भाई वो बंदा। जेनजिन फ्रीक, वेलकम टू द स्ट्रीम भाई, क्या हाल चाल है? आज भी सोलो? हाँ यार, मैं लाइक स्टोरी कंप्लीट करना चाह रहा हूँ जल्द से जल्द। जल्द से जल्द तो नहीं होगा, लेकिन लाइक मैं इंजॉय भी कर रहा हूँ, तो ट्राइंग डिफरेंट डिफरेंट कार्स, ठीक है। बाकी मैं ट्विच पे भी जल्दी से लाइव जाने वाला हूँ, मल्टी स्ट्रीम होने वाली है, तो उधर भी मज़ा आने वाला है। तो या क्योंकि ये पूरा न्यू अकाउंट है, ठीक है मेरा, इसमें कुछ भी नहीं है, मेरे पास गाड़ी वगैरह बहुत कम है, और दोस्तों के साथ खेलने के लिए थोड़ा अच्छा खासा मतलब कलेक्शन चाहिए। ये नहीं, ये मैं खेल नहीं सकता किसी के साथ, लेकिन भाई ये सोलो खेलने में भी मज़ा है भाई, अपना क्रूज कर सकते हैं अपन। मैं वैसे रैंडम स्टफ हूँ यार, ओके। भाई जेनसिन फ्रीक भाई तो पहले भी आ रखा है ना शीट पे। मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर है इसलिए।
मतलब आया होगा तभी तो याद है मुझे ना, स्ट्रॉन्ग है उस हिसाब से तो। मतलब अभी अभी एक भाई कोलोसल रेस किया हमने, ठीक है, 16 मिनट का कोलोसल रेस। मल्टीप्लेयर खेलो बंदों के साथ, सबसे ज्यादा मजा उसमें ही है। कार्स तुम बोरो कर सकते हो वैसे फ्री में। हाँ, कार्स बोरो कर सकता हूँ फ्री में है, ऐसा भी है क्या सीन? वेल मल्टीप्लेयर तो मैं खेलूंगा ही, लेकिन मैंने मेरा जो पिछला अकाउंट है ना उसमें भी मैंने स्टोरी मोड कंप्लीट नहीं किया है, तो आई एम थिंकिंग कि स्टोरी मोड पहले कंप्लीट कर लेता हूँ मैं, ठीक है, उसके बाद तो मौज ही मौज है, उसके बाद तो कुछ भी कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल्स चला सकते हैं, और दोस्तों के साथ तो खेलूंगा ही। तो ये है मेरा प्लान, ठीक है ना, क्योंकि आप गेम खरीदी है और गेम कंप्लीट भी नहीं करेंगे अपन तो फिर वही बात हो गई ना, पैसे बर्बाद वाली। बस मज़ा तो आ रहा है वैसे भी, तो इट्स नॉट कि पैसे बर्बाद हो रहे हैं मेरे, मज़ा आ रहा है वैसे भी, ठीक है। और जैसे अभी कोऑप भी जैसे ऑप्शन आया था ना, वो अनलॉक नहीं हो रखा था, तो जब तक मैं इवेंट्स वगैरह करूंगा नहीं तो कोऑप उसके लिए अनलॉक नहीं होगा उस इवेंट। और फेस्टिवल्स का ये फायदा होता है कि डिफरेंट डिफरेंट कार तुम्हें चलाने को मिलेगी, ठीक है। You said something about a big cat. A long story. प्लस I पॉइंट tracked है it all the मेरा way into सोलो the खेलने jungle, का। but lost my notes. Why don't I explain it on the way? First, let's retrace my steps. We head south, across the highway, and over the hills. Drive into the Vámonos. jungle with Romero. I thought big cats would avoid major highways. Not this one, my friend. Mira, next I turned off-road and hit a बाकी danger तुम्हें अगर मेरे sign साथ on the खेलना way है तो into भाई Mulegé. चैनल पे बने रहो, जल्द से जल्द मैं भाई सब्सक्राइबर्स के साथ खेलने वाला हूँ, ठीक है। Welcome to Mulegé. My aunt, Tia Rosa, runs a stall in the craft और market. थोड़े बहुत टिप्स भी She was दिया the one करो who भाई first मुझे told me about the कि big कौन सी cat. गाड़ी लेनी Now I चाहिए, have your help. कौन सा I'm टीम sure we'll लगाना find चाहिए it. मुझे, क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है। Next, I went across the bridge and into the jungle. We're getting close. Wait, hold up. You owe me हैं a long हैं क्या story. हैं? Perdón, अरे let अपनी me में मत explain. जाओ यार, I मतलब was given coordinates of where this big cat was last sighted. But the plane had mechanical problems on takeoff. I barely got it off the ground. वैलो खेलो जाके, So you dumped your cargo. वैलो Exacto! I lost everything and I never even saw the cat. वैलो खेल सकता हूँ But now वैसे, you're here to help. अभी नहीं And पर it's on the नेक्स्ट way. स्ट्रीम में, Por favor. क्योंकि उसमें भी भाई बहुत अच्छा मेरा चल रहा है, ठीक है, और वैलो भी खेल सकता हूँ, लेकिन भाई अब कंट्रोलर मैंने लिया है इतना महंगा, तो This is the place. I और left my गेम car at the इतना महंगा far end of लिया the है तो runway. खेलूंगा ही ना All my गेम भी, stuff, तो एक डिफरेंट including बात my है। notes, should be in the flight cases. मैं वैसा Think you बंदा can नहीं find कि them एक ही too? गेम में अटका रहता है भाई। देखो डीजे माइंड, The big cat is a car, right? I'm guessing वैलोरेंट, Jaguar? मेरा चैनल का नाम का मतलब ही Sorry, वही did है I not कि mention? डिफरेंट डिफरेंट It's a गेम्स barn ट्राई करना। find. Drop me off at my car once you've found it. Ken, you found my notes. Tia Rosa said the Jaguar was तो abandoned ये by its कहाँ पे owner है भाई इसका 20 नोट, years इनको ago. ठोकना है अपने I को। marked out the rough location on your map. The flight Yay. recorder. It's designed to survive any crash. Maybe not getting run over by a car, but I don't see you getting out to grab it. ओ भाई ये कैसे लूंगा? इसको लेने के लिए भाई टेरिक लगाना पड़ेगा मुझे। ओ बस 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 गया। वो आ सकता है, आ सकता है।
अटक गई है भाई मेरी गाड़ी। अरे किधर तो जा चचा। रिवाइंड ही करना पड़ेगा क्योंकि हिल तो रही नहीं है। अच्छी सी अटकी है भाई। ओके ठीक है। ओ ओ पीछे आ जा भाई, पीछे आ जा। हाँ बच गई बच गई। जी भाई। हाय हाय। अभी सीधी कैसे आए? ओ ये बढ़िया है। ओके ठीक है। भाई तुझे डर नहीं लगता मेरे साथ जो बैठा हुआ है? On my flight suit! नाइस। Bien hecho! What were you wearing to fly the plane? My spare flight suit. What did you think? You can keep it if you like. भाई एक तो इसमें मस्त भाई, जब जब भाई इवेंट वगैरह हो रहा है Other ना end तो of the बारिश वाला runway. मौसम हो I जा रहा parked है my vehicle in the तो hangar. एकदम मस्त लग रहा है गाड़ी चलाने में भी। This one's empty. What was this airfield for anyway? Local fruits and vegetables, maybe? और कहाँ है? ओ ये रहा। कहाँ चढ़ा के रखा है भाई इसने अपना नोट? What the hell भाई। इससे ज्यादा स्पीड कहाँ से लाऊं मैं? फिर पलट गई। ओके बच गया बच गया। लेट मी सी, इधर से तो नहीं है, इधर ही से आना पड़ेगा आपको। My helmet! नाइस। Gracias, my friend. I've been looking for this one. और एक और तो इधर किधर होगा क्योंकि ये वाला एरिया मैंने एक्सप्लोर नहीं कर रखा अभी तक। इधर हो सकता है। Well, if we need spare parts for the plane, we know where to go. ओके इधर नहीं है, किधर है? ओचे वो रहा। ओ भाई कैसी कैसी जगह पे रख रखी है यार। अब इधर कैसे जाऊं? उतर गई। भाई मतलब स्लो जाऊंगा तो चढ़ेगी नहीं। डैम भाई नाइस। अच्छा मैं उधर ठोक भी हो सकता हूँ ना। नाइस।
wearing 100,000 credits. Drop at Oh, my the friend. Just some end of winnings the I made on the race. street scene. Here's my car. Drop me around here when you're ready to leave. Alex wants the biggest dirt racing program Horizon has ever seen. And we are going to give it to him. Deep into the jungle. ये मौसम इतना मस्त है ना, क्या बोलूं मैं। ओके Follow me! Can't get lost if we follow the river! Watch your head! How would you like to visit some old friends along the way? Absolutely. Welcome to Xmal! Once the most powerful city in the region. But I'm afraid we missed my friends by about 1,000 years. Legend has it, La Pirámide del Adivino was built in a single night. It takes us 2 days just to set up a festival stage. El Palacio del Gobernador. They say it's built to align with the stars during the wet season. We'll have to come back and check. We'll take this road. Getting close now. I promised you dirt roads, didn't I? Ale and I used to race buggies around here when we were teenagers. I always won. I hope you've grown out of your rivalry. Rivalry? My friend, in Mexico we call that family. Let's go back across the river. This is Agua Azul. We're so close now. Keep going. अरे भाई भाई तुम रोड देखो भाई, क्या मस्त रोड है। तुम गाड़ी पलट गई वो मत देखो, रोड देखो तुम। We're deep in the heart of the jungle now, my friend. It's just us and the wildlife of La Selva. These roads are treacherous, only reached by the most capable cars. All those that parachute down from cargo planes. Yeah, those two. Oh no! Have we stalled? They'll be back, my friend. Big dirt racing fans. Are those howler monkeys? We didn't have बंदर them भी back है in the भाई। UK. Your jungles must be very boring. And here we are. The waterfalls are right around the corner. Cascadas de Agua Azul. क्या What do you वाटरफॉल है भाई, Is the Mexican मस्त jungle भाई, good enough for Alex and the damn। best dirt racers in the world? It's perfect. I just hope the dirt racers are good enough for the Mexican jungle. ओ ये वाली गाड़ी अपने को फ्री मिल गई। I know what you were thinking all the way through that jungle. This place would be perfect for dirt racing. Funny! I had the same thought. Check it out. Horizon Wilds. A little festival of my own where we celebrate all things dirt racing. Oh. I've started you off simple with a few events, and the drivers and fans have challenges to match. So, off you go and get dirty. 6,500 more athlete points down भाई। ओ ये सब अपने क्लेम ही नहीं किया अभी तक। क्लेम कर लेते हैं, फ्री की चीजें कौन छोड़ेगा भाई। बढ़िया कपड़े। 100,000 credits, damn। एक और मिला था ना शायद इसमें। हाँ
ओके। कपड़े बहुत मिल रहे हैं इसमें। और है कुछ? और है। ओके, ये वाला प्लेलिस्ट था शायद जिसमें अपने को मिलेगी। वेल तुम लोग को दिखाई देता हूँ, वेट। इसमें आई गेस होने वाली है ये वाली। ओके, ये नहीं है। हाँ, ये। तो ये वीटेन वाला प्लेलिस्ट अगर अपन कंप्लीट करेंगे ना, लाइक 5 स्टार के साथ, ठीक है, तो अपने को एक कॉइन्स एफपीएस को मिलेगी फ्री में। तो वो भी अपने को देखना पड़ेगा बाद में। अभी रिसर्च करते हैं ताकि अपने को एक्लेट पॉइंट्स मिले। वेल एक्लेट पॉइंट्स तो इन सब चीज़ों में ज़्यादा मिलता है, लाइक थ्रू द एरियाज। लेकिन येलो वाले प्लेलिस्ट वगैरह में ज़्यादा मिलता है तो। I have a brilliant idea. Another one. What happened to the previous idea? This one is better. Meet me in town. Hey, mi amigo. I've spoken to a local Ferrari club, and they said there might be un clásico in a bar nearby. I said I had a specialist who could take a look. This is going to be good. लेट्स ट्राई अ डिफरेंट कार। ओके, अपने को क्या क्या मिली और कलेक्शन में देखते हुए। ओके, अपने को गिफ्ट्स भी मिले थे, वो अपन ने क्लेम नहीं किया है अभी तक इधर शायद, या फिर कर चुके हैं। देखो ये चला सकते हैं अपन एक, और i8 चलाना है क्या? i8 भी चला सकते हैं। वो ये बढ़िया लग रही है मुझे। ठीक है, वेट देखते तो और क्या क्या है अपने पास। Let's go with the Camaro, okay? क्या कर दिया ये? मतलब अच्छी दिख रही है वैसे तो, लेकिन what the hell? इतना इतना डिजाइन मेरे को नहीं पसंद भाई। एकदम प्लेन कलर कुछ हो एक तो, लाइक इट लुक्स गुड। ओके, well अभी के लिए आवाज तो बढ़िया है भाई।
In 400 meters, turn right. Turn right. बारिश हो रही है भाई. In 400 meters, turn left. Turn left. In 200 meters, you will arrive at your destination. We've reached. I your have two cars here. destination. A first-generation Volkswagen and a seventh-generation Volkswagen Golf. Made in Mexico for almost half a century. Sadly, they stopped building them in 2021. But we can still race them. What do you say? To make it fair, I will give you a chance to make an informed choice. Let's go for a test drive. And I've got lots to tell you about Volkswagen Mexico. Volkswagen Mexico headquarters are in Puebla City. It started production in 1967 with the famous Beetle. As we call it, the Bocho. VW made multiple attempts at replacing the famous Beetle with newer models, but all of them failed way short of achieving the production figures until the Volkswagen Golf came into play. First generation was released in Mexico as the Volkswagen Caribe and had quite a few variations, including the Golf GTI you're driving right now. VW engineers, inspired by the Beetle GSR, designed and prototyped the Golf in secret as a Skunk Works project. Little did they know that the Golf GTI would become the hot hatch. तो अपने को 500 पॉइंट चाहिए था, बस अपन ने 55,000 कर Shall we दिए. jump 40 years in the future and try the 7th generation? ओह, ये बढ़िया लग रही है. Of course भाई, न्यू है तो अच्छी The लगी. 7th वो भी generation अच्छी of the लग रही Golf थी. first appeared in 2012. This version is the Volkswagen Golf R meaning race. इसमें ड्रिफ्ट ज्यादा बढ़िया हो रहा है. This was the fastest Golf in the range, with a 0 to 60 time of 5.1 seconds. Volkswagen Mexico produced all 7 generations of the Golf, totaling more than 2 million units over 44 years. In fact, a lot of Golfs you find in the US were built here.
All right. Enough driving around. Let's go head to head, after you've had a chance to rest. जी भाई 1 स्टार। इससे ड्रिफ्ट हो रही थी लेकिन मेरे को ही नहीं आ रहा था करना। आई एक्सेप्ट डिफीट। I'm a fair man. I'll let you choose. Which Golf do you want to drive for our little race? I'll take the Golf GTI. In 400 meters, turn left. Turn left. At the roundabout, take the second exit. I hope you know some shortcuts. See you at the finish line. Don't make me wait for भाई too long. अरे उसका एक्सेलरेशन पहले हुआ भाई। चीटिंग। वो चीटिंग कर रहा है साले। Ah, I see what you're doing, but you still can't win. What a race! I am actually surprised the first generation still holds up. I'm sure you didn't cheat. गाड़ी से मतलब नहीं है, ड्राइवर से मतलब है। मैं गाड़ी अच्छा चलाता हूँ। आए बड़े ओल्ड जनरेशन। I have a story to ओके अभी गाड़ी चेंज करते हैं। ये नहीं चलाई अभी तक। ये चलाते वेट। अपन ने ये नहीं चलाई, ये भी नहीं चलाई, वो भी चला लेंगे। tell you, my friend,
about the old wolf in the वो swamp. गिरगिट है भाई लेफ्ट साइड में Are we going और to a राइट zoo? में भी. A swamp. I'll pick you up. In 400 meters, turn left. Turn left. वो अंधेरे में लाइट ऑन हो जाती है और फिर बदबू जाती है क्या. भाई इसके अंदर बैठ के तो ऐसा लग रहा है कि लाइक इलेक्ट्रिक है. आई गेस ये इलेक्ट्रिक है क्योंकि द क्रू में तो इलेक्ट्रिक आई थी शायद, पता नहीं. मुझे नहीं लगता भाई इसमें गियर है. इलेक्ट्रिक वाली में गियर नहीं होते. लाइक अगर होते भी है तो 2 गियर होते हैं शायद बस. In 400 meters, turn left. Turn left. Turn left. Turn left. In 400 meters, turn left. Turn left. In 400 meters,
Turn right. Turn right. You have arrived at your destination. बड़ी मुश्किल से पहुंचे हैं भाई इतनी दूर। मुश्किल से नहीं, मतलब टाइम बहुत लग गया, बहुत दूर था। I hope you know some shortcuts. See you at the finish line. Don't make me wait for too long. भाई एक तो इसको भाई मेरे से आगे रखते हैं ये लोग। Ah, I see what you're doing, but you still can't win. What a race! The difference 40 years makes! हाँ, ये किधर गया? बता, इसका प्लेलिस्ट किधर गायब हो गया? डैम, ये था क्या? ये तो नहीं था। टेस्ट ड्राइविंग नहीं। कौन ये था क्या? यार मैं भूल गया, वेट मेरे को देखने दो शीम करके। कि मेक्सिको वाला था, ठीक है। तो मेक्सिको वाला इधर है भाई, भाई बड़ी दूर है यार ये तो। I have a story to tell you, my friend, about the old wolf in the swamp. Are we going to a zoo? A swamp? I'll pick you up. व्हीकल चेंज करते हैं, ठीक है। वैसे भी बहुत दूर जाना है अपने को। In 400 meters, turn left.
Turn left. Recalculating route. In 400 meters, turn left. रिवाइंड नहीं करना चाहिए। मेरे को गाड़ी चेंज करनी है। लाइक ऑफ रोड जा रहे तो ऑफ रोड यूज कर लेते हैं, है ना। जिसने लास्ट टाइम देखी होगी उसको पता होगा भाई ये गाड़ी कितनी मस्त है। Turn left. In 400 meters, turn left. Turn left. You have arrived at your destination. ओके ये लास्ट रेस है इस प्लेलिस्ट का। That's the old wolf.
No, that's an old truck. The wolf is waiting for us at the swamp. Haley asked us to clear some debris, and I've got just the car. But we need to get there first. Of course! Who do you think I am? The driver who destroyed a record-breaking amount of fences. क्या हमें 2 मिनट में पहुंचना है और fair. डैमेज नहीं लेना बिल्कुल. ओह बच गए. In 400 meters, turn right. भाई ये तो द कार्स के मीटर जैसा लग रहा है मेरे को. अब कार्स किसी ने देखी होगी तो पता होगा मीटर कौन है. वो जो जिसके 2 दांत निकले होते हैं भाई आगे. Turn right. Turn right. See? Got it here in one piece. And gave me a few heart attacks. Careful there! This car is too old for this kind of driving! What the heck? What the heck भाई? You get to explain to Haley why she's paying. इतना सा एक पेड़ तोड़ दिया मैंने. And now, let me introduce you to the Ford Lobo. This car is more your style. Damn. Now that's a hecking good wolf. यार मेरे कैरेक्टर ने कच्छा पहन के घूम रहा है पूरी जगह पे. We call it Lobo here. Marketing in this country is भाई. outstanding. Let's get to work. ये See all कौन सी that गाड़ी Russian है stuff? भाई? Clear it out. But no, it's not just an excuse to throw the Lobo around. It is just an excuse to throw the Lobo around. In the 90s, Ford decided that they needed to rebrand the F-150 for the Mexican market. And the name Lobo just has a real ring to it. They started using the badge in 1997, and the rest is history. The Ford Lobo quickly became one of the most popular vehicles in the country. Lobo is still used for the modern Rangers like the one based on the F-150 Raptor you're driving. But we don't just call it Lobo. No. We call it Lobo Raptor. So it's the same car? Now, there are loads of differences, like a dog and a wolf. Lobo only comes in XLT and with higher trim levels. The base version is still sold in Mexico as the F-150, but the Lobo is the elite F-150. अरे यार. भाई इसकी ऑरेंज लाइट्स क्या लग रही है ना बस सामने से.
Great. Job's done. And the scratches will buff क्या right मस्त out. कार है भाई. Thanks for the help. Now I just need to get my abuelo's old F100 back to the garage. भाई 1000 और 1000 भी नहीं यार, थोड़ी सी ही चाहिए थे. Like 150 points और फिर हो जाता. 150, 144, 145 points. I've got 1400 horses and I need you to help with them. I think I know what this is. I'll be right over. In 400 meters, turn right. Turn right. जी चलाई मैंने अभी तक, तुम्हें दिखाई नहीं है ना. वेट, ये दिखाता हूँ. In 400 meters, you will arrive भाई at ये your 300 destination. की स्पीड में ऐसे टर्न्स लेती है ना भाई, तुम पागल हो जाओगे देख के. You have arrived at your destination. वो और भी है. ओके, एक और है इसके बाद. Hey there! So, look at this. 1400 horses of electric Ford Mustang. Get Electric. in! Electric Ford Mustang, right? Damn. Let's take this down to the beach. Ooh, Stick it in भाई. AWD if you like. There's some nice curves up ahead. Whoa! How do you make it go around corners like that? I'm really asking. This is 2021's EV of the year. And it was up against things like the Taycan and the e-tron and the Recharge. It set 3 Guinness World Records, and it's inspired by the beautiful original Mach 1. And I'm telling you all of this because the Mach E was built right here in Mexico at Cuautitlán Assembly. Hey, I have to keep this back. Be careful with it. Calm down. I know you like to go fast, but I had a big breakfast. Cuautitlán Assembly has been building cars since the 60s. And more than 2.2 million cars later, we're sitting in an actual space machine made here in Mexico. Quite a journey from Cougars and Thunderbirds and F-150s to this. This isn't just a prototype. Cuautitlán Assembly does a range of options for the Mach E. A 68 kilowatt-hour standard and an 88 kilowatt-hour extended range version. It will give you over 300 miles of range on a single charge. The Performance GT version is the really wild one. 0 to 60 in 3.6 seconds. This one is quite a bit faster. Honestly, when I first tried it, I had to go and sit in a quiet room for a bit. And I've flown airplanes in a storm. It's wild tech. You can switch from all-wheel drive to rear-wheel drive at the touch of a button.
And when you get into tuning, you can Oh, basically okay. tweak every one of the 7 engines individually. It can make 1400 horsepower and a ton of downforce at 160 miles per hour thanks to the Aero 2. So what you're saying is, not bad for something that weighs more than that F-150 of yours. Yes. अभी ऑल व्हील ड्राइव हो गई है भाई, डैम। भाई ये तो There we मस्त था go. यार। Sunrise over the sea. Beautiful. अपनी कलेक्शन में इसको ऐड But we're not करना done. पड़ेगा। There's one more thing to look at. I'll let you know as soon as I have found it. अब बीच में रुक गए थे ना ऑल व्हील ड्राइव करने के लिए। Okay, this one will be epic. I found the Porsche Carrera. You know what that means? Racing? And what do you mean, found? In a barn, of वेल ये course. कंप्लीट कर And लेते of हैं, उसके course बाद it's फेस्टिवल racing. करते हैं Come अपन। meet me at Guanajuato. Hey, champion. Time for an adventure. Where should we head next? जाएंगे जाएंगे, रुक जाओ। In 400 meters, turn right. Turn right. In 200 meters, turn right. Turn right. In 200 meters, turn left. Turn left. बहुत जल्दी पहुंचा दिया नहीं इसने। At the roundabout, take the second exit. At the roundabout, take the second exit. You have arrived at your destination. This beauty got her name from the Oh. Carrera Panamericana. The races don't run Carrera anymore, but who can Americana. blame us if we take it out one more time? वर्ष है ना Right? शायद ये? Let's see what this car can do. There's Jamin. Guess he wanted one last race. Let's do this!
तो ये है भाई पोर्शे Carrera। The first race had 132 competitors, and everyone turned up. Amateurs to F1 drivers, men, women, professionals, anyone who had a car. Do you know anyone who participated? Aleja thinks Papa Fernando did. Well, she thinks Papa Fernando did everything. I know we used to go to the races with my grandfather. Ah, qué buenos recuerdos. There was no speed limit before 2012, and you'd see cars doing 180 miles per hour. Not that I'd know anything about that. 2,178 miles of the Pan American Highway run through Mexico. The race itself had 9 stages and lasted 5 days. But the sheer distance wasn't the only challenge. Constant changes in the elevation from sea level to 3 kilometers up. The most challenging road race in the world. The winner of the very first Carrera Panamericana was Herschel McGriff, who drove an Oldsmobile 88 at an average speed of 88 miles per hour. The Porsche Carrera got its name thanks to Hans Hermann, who won the small sports cars category in 1954. He drove the Porsche 550 Spider and came 3rd overall. He was sick before the race, and his tires came off at the start. He really pulled through against the odds. Porsche had 6 cars competing in 1954, and all of them made it through the end. A lot of others didn't, let me tell you. Enjoying yourself, are you? Yeah, I kind of had a feeling you were. 1954 was the last year the original Carrera Panamericana took place. But it gave us the most famous Porsche model, the Carrera you're driving right now. The Carrera RS 2.7 was the first production street racing 911. It was built on the 911S 2.4, the fastest Porsche you could buy at the time, and a popular choice in the later Carrera Panamericana races. The race was revived in 1988 and ran to 2016, staying true to the original races with high-speed road stages. The routes for the race were carefully selected every year by planning committee and local government to ensure they were race-worthy and that they can be closed up for 2 hours. You could almost say they've been preparing for the festival for a very long time. This is Jamin's exit. It's been fun, my friend. Take care. Looking forward to seeing what you can do out there. Have fun now, yeah? Great race. Almost like we did a little Panamericana with a friend. Anyways, hope you had fun with this little stroll through cars hechos en Mexico. It was great! And let me know if you, find any other cars like that. क्या भाई और कितनी तेज करूं मैं 1 स्टार कैसे मिल सकता है कि वेट सबसे पहले गाड़ी बदलने का मेरे को नहीं सबसे पहले फेस्टिवल कौन सा था ये था ना Follow the footsteps of an intrepid explorer. Okay. Yes, Carmen is waiting. Tell her the shots of me are actually quite good. Hey, champion. There's no stopping us now.
I'm getting the next Horizon adventure prepped and ready for you. ये क्या कर दिया भाई जी ब्लैक ही अच्छा लग रहा है मुझे तो Turn left. In 400 meters, turn left. Turn left. ओ वापस से बारिश स्टार्ट हो गई नाइस In 400 meters, turn sharp left. You have arrived at your destination. हाँ किधर भाई What the hell? ने हटा रखी है क्या यार Horizon Adventure भाई किधर भाई इधर ही तो थी अब ये होराइजन फेस्टिवल गया किधर फक भाई हेलो
ये है क्या? होराइजन ओरिजिन्स, फिर ये है। हाँ। Hey, amigo. I found something. Drop by when you can. Okay, I'll be right there. ड्रिफ्ट नहीं मार रही है ये। मूड बहुत स्मूथ रही है भाई। In 400 meters, turn right. Turn right. In 400 meters, you will arrive at your destination. ये हम बिल्कुल भी नहीं किया भाई। डैम एक ही किया, मेरे को लगा बहुत सारे कर लिया होगा अपन ने। अच्छा हम Hola, वो hola. उसका Remember the दूसरे old वाले book I told you about? क्वेश्चन में I चले went गए and थे। dug it out of a box at my padre's place. I want to try and find something. पादरेस। And you need a driver. And I need a driver. Yeah, bien. Head for Las Barrancas. I'll explain on the way. Let's go. So, what are we looking for? My favorite book is called El Camino de Sidney Wolverstone, about an explorer who traveled Mexico 200 years ago. In her book, she describes these Atlantes she found, giant statues. But there aren't supposed to be any of those near here. Giant statues? From an old book? That aren't supposed to exist, yes! I've been piecing together clues from the book. Do you think you can get this car right into the river at the bottom of the Copper Canyon? You really don't know me very well.
ओ भाई टाइम कब निकल गया मुझे पता भी नहीं चला। वेल भाई ये लास्ट अपना मिशन होने वाला है, शायद बजने वाले, वैसे तो 5 बजे तक रहती है स्ट्रीम, लेकिन The Copper Canyon is a मजा wonder इतना आ रहा of है कि टाइम का Mexico. पता ही नहीं There चला। used to be 6 separate rivers which came together to create the landscape that we're seeing now. 4 times larger than the Grand Canyon, covering 25,000 square miles. Oh, and the green color in the rock is why it got that name, copper. A ver, let's get pictures here. In the book, Lady Sydney's expedition makes camp here, but that's just a fun story. Yeah, the book talks about setting up camp on an island and finding the statue in the afternoon light. It would have been about this time of day. मुझे तो नहीं दिख रहा है स्टैचू कहीं पे भी। स्टैचू है ये। What the hell? अच्छा वो रहा। That is increíble. How has no one ever found this before? Hola, amigo. According to the book, there is a statue at El Arco de Cabo San Lucas. Wolverstone said she found it at sunset, but I thought we could try an experiment. I've worked out where the book says the statue should be. We can set out and reach the area around mid-morning and see what we can find. Or the other option is we get to El Arco just as the sun sets. If you believe the story, that's when we'll find the statue. ओके भाई, इट्स टाइम टू एंड द स्ट्रीम भाई। जिन्होंने ज्वाइन किया बहुत बहुत थैंक यू। बाकी इट मीन्स अ लॉट भाई, मुझे बहुत मज़ा आया स्ट्रीम करने में। ठीक है, वैसे मेरे से चैट किया थोड़ा बहुत भी, लेकिन बिल्कुल चैट किया, लेकिन उसके लिए बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। बाकी मिलते हैं भाई नेक्स्ट स्ट्रीम में। नेक्स्ट स्ट्रीम कब होगी भाई? कल कौन सा डे है? कल फ्राइडे है, तो कल स्ट्रीम होएगी 2 बजे। ठीक है, जिस टाइम पे होती है, कभी कभी 2:30 बज जाते हैं, सॉरी फॉर दैट। बाकी कल की स्ट्रीम में मिलते हैं। कल की स्ट्रीम भी फोर्जा हॉराइजन होने वाली है, तो मेक श्योर कि भाई कल की स्ट्रीम पे भी आओ। तो मिलते हैं भाई कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, गुड नाइट।